दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। जो मिलूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। जो मिलूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। Hold, check, hold. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। Hold. माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर
दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना जिसमें तेरे निकले दम। जिस जगह पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हो
पहले वफा के सामने, पहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा, उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों,
खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो अभिमानी, क्या लोग थे वो दीवाने, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद। एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना वतन, एक है अपना जहां, एक है अपना गगन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं। जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। फूलों के चेहरे जर्द हैं, जुल्फे फिजा की गर्द है। उमड़ा हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है। बेकार हो बेजार हो, आमादे पैकार हो। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। ये है हिमालय की जमीन, ताजो अजंता की जमीन। संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है। गुलमर्ग का महका बदन, जमुना का तट को कुल कमन। गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर। कह दो कि हम बेजार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं।
जवाना ने वतन बांधे हुए सर से कफन, उठो दखन की ओर से, गंगो जमन की ओर से। पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से, दिल्ली की अर्ज़े पाक से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेपाल से, राजस्थान से, कुल खाक हिंदुस्तान से। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नदियों की पावन धारा है मंगलमाला गंगा की, मंगलमाला गंगा की। कमरबंद है विद्यार्थी का सातपुड़ा की श्रेणी की, सातपुड़ा की श्रेणी की। सह्याद्री का वज्रहस्त है, सह्याद्री का वज्रहस्त है। पौरुष को पहचाने हम, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया काल
बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज बापू ने पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात, जय जय गुजरात, जय 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 गरवी गुजरात। जय सोमनाथ, जय द्वारकेश, जय सोमनाथ, जय द्वारकेश, जय बोलो विश्वनाथातनी। स्वर्ण अक्षरे लक्षे कवियो यश गाथा गुजरातनी, यश गाथा गुजरातनी, आ गुणवंती गुजरातनी, जय जय गरवी गुजरातनी। भक्त सुदामा अने कृष्ण ना मित्र भाव भूलाए नहीं, मित्र भाव भूलाए नहीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसइयो विसराए नहीं, नरसइयो विसराए नहीं। जय दत्त दिगंबर गिरनारी, जय दत्त दिगंबर गिरनारी, जय बोलो कालिका मातनी। स्वर्ण अक्षरे लक्षे कवियो यश गाथा गुजरातनी, यश गाथा गुजरातनी, आ गुणवंती गुजरातनी, जय जय गरवी गुजरातनी। अमर भक्त वीरों नी भूमि, जैना गुण गातू संसार, जैना गुण गातू संसार। राजाओं ना ताज मुकाव्या, धन्य वीर वल्लभ सरदार, धन्य वीर वल्लभ सरदार। जय दयानंद, जय प्रेमानंद, जय दयानंद, जय प्रेमानंद, जय बोलो बहुचरा मातनी। स्वर्ण अक्षरे लक्षे कवियो यश गाथा गुजरातनी, यश गाथा गुजरातनी, आ गुणवंती गुजरातनी, जय जय गरवी गुजरातनी। दलपत लाला, दलपत नाना लाल दयाना, मधुर काव्य भूलाए नहीं, मधुर काव्य भूलाए नहीं, मेघाणी नी शौ
शौर्य कथाओं अंतर थी विसराए नहीं, अंतर थी विसराए नहीं। अमर काव्य नर्मद ना गूंजे, अमर काव्य नर्मद ना गूंजे, जय जय अम्बे मातनी। स्वर्ण अक्षरे लक्ष्य कवियों यश गाथा गुजरातनी, यश गाथा गुजरातनी, गुणवंती गुजरातनी, जय जय गरवी गुजरातनी। मळ्या तेल भंडार द्रव्यना, विश्व पितानी बलिहारी। धन्य धन्य गुजरातनी धरती, थया अहीं बहु अवतारी। जय साबरमती, जय मही गोमती सरस्वती, जय तापी गोमती सरस्वती, जय बोलो नर्मदा मात की। स्वर्ण अक्षरे लक्ष्य कवियों यश गाथा गुजरातनी, यश गाथा गुजरातनी, गुणवंती गुजरातनी, जय जय गरवी गुजरातनी। हिंदू मुस्लिम बोरा पारसी हળી મળી સૌ કાર્ય કરે, हरी मरी सौ कार्य करे, सृष्टि ने खूणे खूणे गुजराती जन व्यापार करे। गुजराती जन व्यापार करे। जय सहजानंद जय जलाराम, जय सहजानंद जय जलाराम, जय बोलो अम्बे मातनी। स्वर्ण अक्षरे लक्ष्य कवियों यश गाथा गुजरातनी, यश गाथा गुजरातनी, गुणवंती गुजरातनी, जय जय गरवी 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 गुजरातनी। Namaskar. So while we are waiting for the esteemed guests to arrive and the program to begin, I hope you are enjoying the patriotic songs. These songs are being sung live by the students of Faculty of Performing Arts from the Maharaja Sayajirao University. Continue with the songs for some more time till we begin. Enjoy. हेलो।
तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Namaskar and a very good morning to all. So our wait for the inaugural session is over. Our esteemed guests have arrived. May I request the dignitaries, Rajmata Smt Shubhanginiraje Gaekwad, the Chancellor of the Maharaja Sayajirao University of Baroda, Professor Dr. Vijay Srivastava, sir, Honourable Vice Chancellor, the Maharaja Sayajirao University of Baroda, Shri Keurbai Rokadia, Mayor and MLA Sayajiganj, Vadodara, Ms. Meeta Lochan, IAS Officer, Ministry of Youth Affairs, and Dr. Archana Soreng to kindly come up and take their seats on the dais. May I request Registrar Sir to kindly escort the dignitaries on the dais.
On behalf of the Maharaja Sayajirao University of Baroda, we take immense pleasure and privilege to have you all for this youth consultation under the banner of G20 Y20 under the aegis of India's G20 presidency, being jointly organized by the university in collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Education Department of Government of Gujarat, Sports, Youth and Cultural Activities Department of Government of Gujarat, in the cultural capital of Gujarat, Vadodara. Today's Y20 consultation will focus on climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. Before we begin the program, may I request all to kindly rise for the university song. सारवनारा अमि ज्योत जलावी सृष्टि नवली सहसा सर्जनहारा अमि वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा अमि ज्योत जलावी सृष्टि नवली सहसा सर्जनहारा अमे गगन कुसुम कर धरनारा अमे मगन मगन थई फरनारा अगन बाध अमे भरनारा अमे दैन्य तिमिरने हरनारा अमे वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा अमे ज्योत जलावी सृष्टि नवली सहसा सर्जनहारा श्री सयाजी विद्यापीठना ज्ञान दीप ने धरनारा श्री सयाजी विद्यापीठना ज्ञान दीप ने धरनारा सत्यम शिवम सुंदरम नो मंत्र अनंतर मणनारा It is an Indian tradition to begin with the invocation of the Lord Almighty. I request the dignitaries on the dais to kindly come forward and light the lamp and the students of performing arts for the invocation. 1, 2, 1, 2, 3, 4. वृषन्नग्ने विश्वानयः तिरस्पदे समित्यसे सनो वसून्याभर ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानं मन सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आगूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
Today, when we are talking of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one universe, it gives me pleasure to share that the invocation which you just heard is the last sukta of the Rig Veda, which is also called the Sangathan Sukta, and it is a prayer for universal brotherhood. This was composed by Dr. Rajesh Kelkar and performed by the students of Performing Arts. अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us a distinguished panel of guests who have taken time out of their busy schedules to join us today. I request Professor Vijay Kumar Srivastava, Honourable Vice Chancellor of the University, to welcome our esteemed Chief Guest, Shri Keyur Bhai Rokadia, Mayor Vadodara and MLA Sayajiganj. Okay. I request Dr. Krishna Kumar Chudasama, Honourable Registrar of the University, to extend a special welcome to Srimati Shubhanginiraje Gaekwad, Honourable Chancellor of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. Madam, your leadership and guidance have been invaluable to us, and we are grateful for your continued support. I request Professor Vijay Kumar Srivastava, Honourable Vice Chancellor of the University, to welcome our esteemed Chief Guest, Shri Keyur Bhai Rokadia, Mayor Vadodara and MLA Sayajiganj. Sir, your presence here is a great inspiration to us all. We are grateful for your support and encouragement. I once again request Professor Srivastava, Honourable Vice Chancellor of the University, to welcome our guest of honour, Ms. Meeta Rajivlochan, Honourable Secretary, Youth Affairs, Government of India. Madam, your presence here today is a testament to the importance you place on education, and we are grateful for your support towards our university. I request Professor Bhavna Mehta, Dean Faculty of Social Work, to welcome Dr. Archana Soreng, Member of UN Secretary General's Youth Advisory Group on Climate Change. Madam, your presence here is a great source of motivation for our students and faculty.
Professor Haribhai Kataria, Dean Faculty of Science, is requested to welcome Professor Vijay Kumar Srivastava, Honourable Vice Chancellor of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. Sir, your vision and dedication have been instrumental in the growth and development of our university. Ladies and gentlemen, we welcome and express our gratitude to you all for your presence here today. Your presence here is a great motivation for us all to continue striving for excellence. And now, I request Professor Vijay Kumar Srivastava, Honourable Vice Chancellor of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, for welcome address. Hello. Hello. Good morning to one and all. Honorable Mayor of Baroda City, Shri Keur Bhai Rokadia ji, Honorable Chancellor of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Srimati Shubhanginiraje Gaekwad ji, Secretary of Ministry of Youth Affairs and Sports, Srimati Meeta Rajivlochan ji, Registrar of the University Shri K.N. Chudasama ji, हमारे UN से पधारे हुए स्पीकर, Senate members, syndicate members, international speakers and delegates from G20 countries, delegates from Y20 Secretariat, delegates from Department of Youth Affairs, my dear youth ambassadors of Y20 consultation meet, ladies and gentlemen. Today, Honorable Chief Minister of Gujarat, Education Minister and Minister of Youth Affairs, Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, Education Minister Shri Rushikesh Bhai and Minister of Youth Affairs Harsh Bhai Sanghvi could not attend this program because of the budget session, but he has conveyed his best, they have conveyed their best wishes for successful completion of this seminar, one-day seminar. On behalf of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda and on my own behalf, also on behalf of Ministry of Youth Affairs, Education Department, I welcome all the delegates attending this U20 consultation. I'm glad to share that today the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda is hosting U20 consultation meet. It is an international conference organized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Education Department, Government of Gujarat to mark the celebration of India's G20 presidency. The theme of this one-day conference is Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life. This is the theme of this conference. Total 600 delegates across 62 countries are participating in this international conference. This conference is being organized on the motto of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family and one future, which will channelize the awareness of environment conservation among youths. India has got the presidency of G20 this year. Different programs and conferences are being organized across the India to celebrate the remarkable achievement of Indian. The G20 nations represent about 66% of global population and 75% of the global trade in form of our economy. Vadodara alludes to the city amid the lush canopy of banyan tree. It is very appropriate to have this climate change related event in the Baroda city. Climate change affects more not only intellectual debate or scientific reassessment, but also has an impact on global temperature,
water shortage, and agricultural practices. It is now affecting energy use, health, infrastructure development, economic prosperity, government policies, and even global practices and policies. Formerly, Honorable Shri Narendra Bhai Modi ji was Chief Minister of Gujarat. The state is growing on his footsteps. Following the milestone he established under the Modi ji's leadership, Gujarat formed the first independent climate change department in the country and Asia, and fourth in the world, with several new initiatives in the year 2009. So let us have a big round of applause for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. Gujarat is developing to new heights with rising urbanization, and as a result, more than half of Gujarat's population lives in urban area. As climate action plan, several projects such as smart cities and Amrit have been effectively implemented to provide vital facilities for the city dwellers. Yet, we are also ready to risk brought on by the climate change such as floods, heat waves, and storm. Together with the disaster management plan in each metropolis, micro-planning, heat wave action plans, and flood mitigation actions are also being developed at the local level. Since the amount of population is rising along with the number of automobiles in the cities, we are not satisfied to merely monitor it. Yet, we are implementing a program to promote electric vehicles over petrol and diesel vehicles. In an effort to alter the youth's perception of environment, Government of Gujarat provides substantial subsidies to school and college students who purchase electric vehicles. In the future, a massive food shortage will occur due to consequences of climate change. Gandhiji used to say that the real India is found in the villages and that this India can lead the rest of the world in the new way. Millet is the subject of discussion today, and this year we are celebrating International Year of Millets 2023. That is also a part of this. Why I am talking about millets? Because the crop is far more nutrient dense and can be grown on very little land and very little water. The farmers who grow millet are being encouraged by our government. Mission Life, that is the lifestyle for environment, it was launched by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, in presence of Secretary General of United Nations at Statue of Unity. It is a great initiative to combat the problems of climate change. Our lifestyle can bring about significant changes and may contribute for climate change reduction and also for disaster risk reduction. Small changes in our lifestyle like use of cycle, carpooling, use of renewable energy, solar energy, maintaining AC temperature at 27 degrees Celsius, use of e-vehicles, these small practices can help us a lot. Our conference kit is also environmental friendly. When you will open our conference kit, you will find our pen, pencil, toothbrush, calendar, mobile stand, and all the articles are environmental friendly. You will not find any use of plastic in this conference. This way, this type of small initiatives can support a lot, and it also supports to our theme, that is climate change and disaster risk reduction, Y20 consultation meet. I hope it is the takeaway for all the delegates after attending this conference, after attending this Y20 consultation meet, all will have this message that this is our environment and we have to preserve the environment. Need of the hour is pro-planet people and pro-planet policy. We should again have the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. One more thing I would like to tell, the bottles which are given to all the guests at the dais, it is again our startup. This is the startup of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. So big round of applause for those students, those who are coming up with new startups. And also we have shown certain other startups in the exhibition area, that is Startup SSIP Policy 2.0, which is shown in the outside area. I invite all the delegates to go in that particular area.
And the songs which you were listening, probably you could not see the singer. So these songs were not played. It was performed by our performing arts students. So big round of applause for our performing arts students. With these words, I convey my best wishes for the successful completion of this one-day international event, that is climate change and disaster risk reduction. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you so much, sir, for creating an atmosphere for today's program and setting the ball rolling. Let us understand that there is no planet B. The climate is changing, and so should we. The time for the action is now. We need mindset change, we need system change, we need policy change to counter climate change. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to share that we have with us Dr. Archana Soreng, the member of UN Secretary General's Youth Advisory Group on Climate Change, and who could be a better person than her to deliver today's thematic address. Madam, may I request you? Johar, it's an honor for me to be present here and speaking to you all. Respected all the dignitaries and all the faculties and professors and the entire fraternity of the university present here, and my dear, all of my young people sitting out there. First of all, I would like to say let's give a huge round of applause for all the young people here. Well, we are here in the Y20 Summit talking about young people and climate action. We are in the times where we all, young people and people from the marginalized communities, indigenous people, women, children, are being affected by climate crisis differently. We all are impacted by climate crisis, but we all are impacted differently. And our solution needs to take into consideration this. We need dialogue, we need intergenerational dialogue, and we need intersectional dialogue where each communities are being able to present their perspective, their worldview, and collectively we are working towards solution. And what gives me immense happiness is that we are here from different groups, different communities, and different countries coming all together for one goal, which is to address climate action. I would like to say that as we move towards addressing climate action, one of the key things which is really critical at this point of time is participation and leadership of young people, and for which we need safe and enabling spaces for young people. Young people have been engaging in different thematics, eras, showing their skills, and have been advocating for what they believe in. All I want to say to all the young people out here, you all are unique. You all are unique, and you all are contributing towards this discourse in your own way. We all need to embrace ourselves, be proud of ourselves, be proud of our identities, and believe in ourselves. Even when the times are difficult and hard, we have to continue to believe in ourselves, respect each other, and extend a hand of solidarity. Because diversity within ourselves is what makes us strong and builds up unity. I would like to say that when we are talking about indigenous people, Adivasi communities, and forest-dwelling communities, and communities, those who are most affected by impacts of climate crisis. These are the communities who are the least contributors to climate crisis, yet they are affected the most. We all need to address that how mitigation, adaptation, and climate resilience needs to ensure that these communities are in the front lines. And that's why I have been advocating that indigenous people, young people,
Women and girls should be leaders of climate action and not victims of climate policies. I would like to share a few of the things which I practice as I end my interaction with you all. What can we do is the question I'm often asked. Like, how can I contribute to climate action discourse? The three things which has helped me is what I would like to share with you all. First, build your own communities. Climate crisis itself is a vast domain and is a critical topic, and as I said, everyone is impacted in a different way. Build your community of learning, knowing about climate crisis, because the policy document, the report documents are so heavy at times that it feels difficult. But when you build a community, you get an opportunity to learn with each other, to know what is the different perspective and interpretation your friends is giving. And this build your community is not only limited to your region or limited to India, but across the world is what is really important, because when we build community, we learn and we grow. Second thing is like every little steps counts. Every little contribution or steps you take ahead in this counts. Like, for example, whether it is assessing your own carbon footprints, assessing your way of living, your livelihood styles, your living changes makes difference. And that's why I feel it's really important whether you are advocating, making your voices heard, speaking up, or contributing in making lifestyle changes, it really matters. And that's why I would like to say that each little steps makes difference. The third and the most important thing which I feel is respect, love, and solidarity. It is really important to respect the perspective and worldview of each other. Sometimes we may have differences, sometimes we may have similarities, but what is important is like why the other person is thinking this way. What is the causes? And why am I thinking like this? Because that is why the problem, the crisis is itself a holistic and critical. We need critical thinking for coming up with solution. So thank you everyone, and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, madam. Let us also remind ourselves to the words of Mahatma Gandhi, who once said, "Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed." With this, I request our guest of honor, Ms. Meeta Rajivlochan, to speak a few words of motivation. Honorable Mayor Vadodara, Keyur Rokadia ji, Honorable Chancellor Rajmata Shubhanginiraje Gaekwad ji, Archana Soreng ji from the UN Secretary General Youth Advisory Group, Vice Chancellor MSU Baroda Dr. Srivastava, Registrar MSU Baroda, my dear young friends, faculty members. Friends, it's a pleasure and a privilege to be present on the occasion of this International Youth Consultation that has been organized by MSU Baroda. The theme for today's consultation, that is climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life, is a key theme for the future of Gujarat, for the future of India, and for the future of the world. And given the immense domain expertise of MSU Baroda, it was the most appropriate institution for hosting this particular consultation. And we are indeed grateful. And we are indeed grateful to the faculty and students of MSU Baroda for organizing it in such a wonderful way, and for the warm welcome and the hospitality that they have offered to all the delegates who have come here from different countries in the best traditions of Atiti Devo Bhav.
Friends, if you look at Indian history, it is the youth of India who have built this nation. Mahatma Gandhi was all of 21 years old when he started the agitation in South Africa. When he came to India and he took charge of the mass Indian national movement, he was 40 years old. Chandrasekhar Azad, Shahid Bhagat Singh, all of whom are youth icons, they were in their 20s. Veer Savarkar was 21 years of age when he set up the Abhinav Bharat Society. In every sense of the word, it is the youth of the nation who have built India in the past, and this is also the case today. When I see all of you today, when I see your energy, when I see your enthusiasm, I am reminded once again the critical role that youth play today. When we look at the chief ministers of India, about 1/3 of them became chief ministers in their late 30s and early 40s. When you look at the top businesses in India, many of them started their businesses in their 30s. So, whatever be the sector, whether it is politics, whether it is business, whether it is academia, community service, it is the youth who are leading the charge, who are building this nation. And that is why during the G20 presidency, it is critical to provide a platform where their voices could be heard and they could be told in no uncertain terms that they have a seat at the table. This is precisely what the Youth 20 consultation hopes to do. The Department of Youth Affairs, through the Youth 20 Engagement Group, is planning to hold consultations pan-India, where a forum will be provided to youth to articulate their ideas, to discuss and debate and tell us about what are the best policies that can create a better India, that can create a better future, not just for India, but for the world. When we look at Gujarat today, we see so many stories of innovation in climate change, in business, in so many other sectors. Those stories of innovation carry a lot of lessons which are of great use for building public policy, and this is the appropriate forum where India can talk about the work done and discuss in multilateral institutions how best to use this experience to devise robust public policies for the entire world. India for the world. That is the theme for the Youth 20 Engagement Group. So I look forward to very robust discussions in all the panel discussions that are going to be held today. And once again, I wish all of you my heartiest best wishes and congratulations from the side of the Department of Youth Affairs. Thank you. Thank you, Madam. Your words will lead to concrete actions that will help create a sustainable future for us and generations to come. I request Srimati Shubhanginiraje Gaekwad, Honourable Chancellor of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, to share her views. Namaskar and a warm welcome to all in the Maharaja Sayaji Rao University campus. Our chief guest today, Shri Keurbai Rokadia, Honorable Mayor and member of the Legislative Assembly of Gujarat. Srimati Meeta Rajivlochan, who is Secretary in the Youth Affairs, Government of India. Ms. Archana Soreng, Advisor and Representative at the UN. The Vice Chancellor, Professor Srivastava. Our Registrar Dr. Chudasama. All the eminent speakers who have come, experts who have come, especially to speak at this forum, and the young audience that we have today.
as we are addressing the Youth 20. It's a proud situation. It's a proud day for me to be the Chancellor of this prestigious university. It's also a proud moment for our university to be hosting the Youth 20 India Summit 2023. This is the International Conference on Climate Change and Disaster Risk Reduction, making sustainability a way of life under the aegis of India's G20 presidency. The most important, I feel, the subject, the G20 is, of course, going to have so many issues to discuss when they meet in September. But preliminary to that, we all realize today, and seeing to the disasters all around us, the natural disasters which are taking place all over the world, that climate change is the burning issue for today. It is the burning issue. And I'm grateful to the Ministry of Youth Affairs, Government of India, that they have given this privilege of hosting this convention to our university when we are discussing the most important issue, which is going to be the most important issue at the G20 also. So it's really a very, very important day for the youth, important day for us who belong to this university, that we are welcoming students from all over internationally and from different parts of India, and our own students, because as I address you, dear students, you need to lead us now. That is the message that we need to give, that you need to lead from the front and not just be listening to people and just, you need to give your ideas. You need to lead from front and you need to tell us what to do. Sometimes we need to listen to the youth to tell us what to do. Srimati Meeta ji ne bataya abhi ki how many young, it's at the youth of India in the past, the history has shown, at a young age, people have achieved the real work which they were destined for. We cannot have a bigger youth icon than even Swami Vivekananda ji, who took India on the world platform and was one of the most motivating factors for the youth of our country. So thinking of all that and thinking of this burning issue of climate change, I feel that it is now the time for the youth to lead us. As we all know, overuse of fossil fuels, deforestation, exploitation of natural resources, all this has been the main cause of climate change. And it's high time that what we took from Mother Earth, that we put it back again. We've just been exploiting. We treat the earth, we call the earth as Mother Earth. It is our maa ke darja dete hain. Lekin when it comes to take away, we don't think twice about it. It's high time that we start putting back something into the earth, enrich the earth, bring the natural resources back again, and have a little sensitivity of what we are doing. I'm not going into details of what is the action that needs to be done, but I really sincerely hope that this convention will have an action-oriented plan for the mitigation of climate change, for the mitigation of the disasters which are taking place, and making a more sustainable life for all of us. We need to retrospect on it at an individual level, also at a larger level. Individually, everybody needs to think, what can I do? And adopt it now, actually from now onwards in our daily life, whether it is saving our resources, saving our electricity, saving our
power, saving our paper, water. Everything needs to be taken care of. Saving our forests, saving our trees. I mean, it just goes on and on. But do we do it in our daily life? Does each and every individual who's present in the audience today is going to take a vow that from tomorrow I'm not going to do anything that will damage the earth in any way? These are the action-oriented plans that we need to take. This is what we need to do very seriously at individual level, at institution level. I'm glad that when the Prime Minister created a department for climate change in the Government of India, but before that, we had already had a department for climate change in our university. And that is important. So, but with all this, we know what's happening to the world. We have to save our city, our state, our country, and the whole planet, which is our whole world, is ours today. So with this few words, and I really hope that this, give my very best wishes to this convention. I'm sure they will come out with an action. You're going to have a lot of important experts, professionals speaking to you, and I'm sure all that will encourage you to make your own action plan for the saving of this great planet. Thank you. Thank you so much, ma'am. We need your blessings and guidance always for all the programs of the university. Friends, we have to wake up to the fierce urgency of climate change, and spreading awareness is just the first step. It gives me immense pleasure to introduce to you Itivrit. Itivrit is the print media lab journal of Faculty of Journalism at the Maharaja Sayajirao University of Baroda. It is a training tool through which the students get exposure for reporting, editing, designing, and publishing. Incidentally, their current edition is on the theme of climate change, and we are glad to release the newsletter on this Y20 platform. So congratulations to team Faculty of Journalism and Communication. I'm also happy to share that it will be available on the Y20 website for all of you to access. It is a matter of great pride and privilege to have with us Shri Keurbai Rokadia, Mayor Vadodara and MLA Sayajiganj, who is a civil engineer himself from our own university. May I request you to kindly address the August gathering, sir. भारत माता की। इतना सारा यूथ बैठा है, थोड़े बहुत बाहर की कंट्री से, बाकी तो अपनी कंट्री से है ना। भारत माता की। धन्यवाद। द MS यूनिवर्सिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक संयुक्त कार्यक्रम यूथ 20 Y20 कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजमाता शुभांगिनीराजे गायकवाड़ जी, मीता राजीवलोचन जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस अर्चना सोरेंग जी,
Dr. Vijay Kumar Srivastava, Vice Chancellor of MSU, KM Chudasama ji, Registrar of MSU, अलग अलग देशों से हमारे बीच उपस्थित डेलीगेट्स, हमारे यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी में अलग अलग देशों से पढ़ते हुए हमारे विद्यार्थी, आप सब उपस्थित एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, सेनेट सिंडिकेट मेंबर्स, हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन हितेंद्र भाई, एक्स एमपी जयाबेन, आप सब उपस्थित भाई और बहनों, ये G20 की बात पूरे देश में चल रही थी। तो ये G20 क्या है, ये भी एक बड़ा प्रश्न सबके बीच में था, मेरे बीच में भी था। भाई G20 क्या है और ये क्या होने जा रहा है पूरे देश में। पूरे देश में 200 कॉन्फ्रेंसेस होंगी 50 शहरों के अंदर, लेकिन पूरे देश में ये क्या माहौल बन रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता था। आपने अलग अलग देशों के समूह, कहीं पे ब्रिक्स कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, कुछ 5 देशों के समूह, कुछ 4 देशों के समूह, ऐसे सभी सुने होंगे। लेकिन इसमें से मैं इतना कह सकता हूं कि यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा शक्तिशाली जो कोई समूह है वो है G20, और उसकी मेजबानी इस बार इंडिया कर रहा है, उसके चेयरपर्सन नरेंद्र भाई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मेरे आगे के वक्ताओं ने बताया भी कि पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इस 20 देशों के अंदर रहती है, उसका 75% ट्रेड इस देशों के अंदर होता है। 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ये देश कंट्रीब्यूट करते हैं। इतने शक्तिशाली ये G20 के देश हैं। अब ये सभी देश, मेरे ख्याल से बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स भी हैं। अब ये सभी कंट्री के लोग डेलीगेट्स हमारे देश में आएंगे। हमारे देश की जो हेरिटेज है, हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो नेचर है, हमारे देश की सभ्यता की बात है, हमारे देश की लीडरशिप की बात है, हमारे देश का विकास है, अब ये सारे देश भी जानने वाले हैं। वैसे हमारे देश 2014 के बाद पहले कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि जिसकी इतनी गणना विदेश में नहीं होती थी। 2014 के बाद यह परिस्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ है। पहले ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व अच्छा होता था, लेकिन अब ऐसी विश्व की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें भारत का मत नहीं गिना जाता हो। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य भी हमारे देश ने किए हैं जिसके कारण भारत ने पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाई। जहां पे भी कभी विश्व के अंदर प्रॉब्लम आता है तो सबकी नजर भारत की ओर दौड़ती है। चाहे फिर वो यमन का युद्ध हो, नेपाल में भूकंप हो, सूडान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, भारत ने हर हमेश जाके विश्व की मदद की है। यहां तक कि कोरोना का काल था, तब भी जब वैक्सीनेशन की बात आई तो पूरे विश्व के अंदर दवाइयां और वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम भी भारत ने किया। और आप सभी तो विद्यार्थी भी है, तो अभी तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ, तब भारत अकेली ऐसी कंट्री थी जिसके वड़ा प्रधान के आग्रह पर 6 घंटे युद्ध रुका। यह विश्व की पहली घटना होगी। यह शक्तिशाली भारत की आज पहचान है। ऑपरेशन गंगा चला के हमने 20,000 से अपने ज्यादा बच्चों को यहां पे लाया। सिर्फ हमारी कंट्री के नहीं, विदेश की 18 कंट्री के भी बच्चों को भारत लाया गया है। यहां तक कि
जो भारत का झंडा लेके निकले थे उन पे गोली नहीं चलाई जाती थी। पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का झंडा लेके निकलते थे। ये हमारी ताकत, आज की ताकत है। और क्यों ना हो, क्योंकि भारत युवा देश है। विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसकी 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। हर एक विश्व की अलग अलग देश की एजिंग होती है। हमारी आज विश्व की सबसे यंग यूथ हमारी कंट्री है, और इसके कारण, हमारी मजबूत लीडरशिप के कारण, आप सबके कारण यह सब शक्य हो सका है, मुमकिन हो सका है। आज यूथ 20 के माध्यम से जो हमें कॉन्फ्रेंस मिली है, वैसी 200 कॉन्फ्रेंस 50 शहरों में भी होने वाली है। G20 के माध्यम से अलग अलग टैलेंट 20, T20, बिजनेस 20, B20, अर्बन 20, U20, और वैसी ही आज की कॉन्फ्रेंस का यूथ 20, Y20 का विषय भी क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये दिया गया है। जब कभी भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है तो विदेश से लोग भारत आते हैं, यहां की हेरिटेज कल्चर भी देखते हैं, लेकिन यहां भी पैसा भी खर्च करते हैं। यहां बिजनेस भी बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, आमदनी होती है, देश के यूथ को ही इसका फायदा मिलता है। जब कभी भी डेलीगेट्स यहां पे आएंगे, हमारी कल्चरल हेरिटेज देखेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल टूरिज्म बढ़ेगा, हेरिटेज टूरिज्म बढ़ेगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, एग्रीकल्चर टूरिज्म बढ़ेगा, साइंस का टूरिज्म बढ़ेगा। सभी टूरिज्म का फायदा इस देश को भी मिलने वाला है। मैं यहां पे आया तो मैंने स्लोगन देखा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारी कल्चर है और हम सभी देशों का स्वागत भी करते हैं। हम सभी देशों को, भारत तो विश्व गुरु था, उस दिशा के अंदर हम मार्गदर्शित भी करने की क्षमता रखते हैं। हम तो वो लोग हैं जो जीव में शिव को देखते हैं, हर एक आदमी में हम गॉड को देखते हैं। हम नर में नारायण और नारी में नारायणी को देखने वाले लोग हैं। हम नदी में मां को, पौधे में परमात्मा को और कंकर में शंकर को देखने वाले लोग हैं। वसुधैव की कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति में डाली गई है, और इस भावना को कौन आगे बढ़ा सकता है? तो इस भावना को भारत देश का यूथ आगे बढ़ा सकता है। और इसी समिट के कारण जो वडोदरा में दी गई है, तो पहले तो मैं यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वडोदरा में भी ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री और अन्य मंत्रीगण भी यहां पे उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन बजट सेशन के कारण वो नहीं रह पाए थे। तो सद्भाग्य से इसका चेयर करने का मौका मुझे मिला है, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। जो यहां पे बात होने वाली है वो पूरे दिन अलग अलग सेशंस के माध्यम से अलग अलग विदेशी और अपने भी कुछ डिग्निटरीज यहां पे आप सबको कुछ न कुछ बात क्लाइमेट चेंज की या तो फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज के विषय में आप लोग जानते भी हैं कि जैसे जैसे व्यापारीकरण बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, उद्योग बढ़ते हैं, वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो कुछ मेजर्स ये लोग आपको बताएंगे, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की भी बात हो रही है। जैसे क्लाइमेट बदलेगा तो उसके कारण बारिश, पानी, इनमें भी ज्यादातर चेंज आएंगे, वाटर शॉर्टेज भी होगी, डेजर्ट का दायरा भी सर्टेन जगहों पे बढ़ रहा है, सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे 2050 तक कई शहरों में सी का पानी चला जाएगा, ऐसे भी बात कर रहे हैं कुछ लोग। इन सभी को अगर रोकना है, ये सारे डिजास्टर को रोकना है,
तो ये आज का यूथ डिसाइड करे हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, उसी के माध्यम से ये हो सकता है। मैं एक दो चीज बात करूंगा, बाकी पूरी कॉन्फ्रेंस पूरे दिन आपको ये बातें बताई जाएंगी। राजमाता ने बोला ना कि इसकी डिटेल तो आपको देंगे बाद में सभी लोग, लेकिन एक दो चीज का मैं यहां पे उल्लेख करूंगा। हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करें, विंड एनर्जी का उपयोग करें, हाइड्रो पावर एनर्जी का उपयोग करें, यह हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मैं यहां पे इसका उल्लेख इस वजह से कर रहा हूं, इसको मेंशन इस वजह से कर रहा हूं, पूरे इंडिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का उपयोग होता है तो वो गुजरात में होता है। और मैडम, गुजरात के अंदर अगर किसी एक शहर के अंदर सोलर रूफटॉप अपने अपने रूफ के ऊपर, मकान के ऊपर सोलर रूफटॉप लगे हुए हैं तो वो वडोदरा सिटी के अंदर लगे हुए हैं। टोटल गुजरात के अंदर 25% सोलर रूफटॉप गुजरात के वडोदरा सिटी के अंदर लगे हुए हैं। इसकी वजह से मैं सोलर एनर्जी का मैंने यहां पे नाम लिया है। ई बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही थी, तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगले 5-6 महीनों के अंदर अपनी जो सिटी बस है वो सारी ई बसेस के जरिए रिप्लेस कर रहा है। हमारे यहां पे एक और चीज, जब यहां पे विदेश के बच्चे भी आए हुए हैं और विदेश से डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 2017-18 की ये बात है, बान की मून यूएन प्रेसिडेंट वडोदरा में आए थे और पूरे देश का सबसे पहले कैनाल सोलर रूफटॉप इन्होंने इनॉग्रेट वडोदरा के अंदर किया था। 10 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। आज वडोदरा के अंदर कैनाल सोलर रूफटॉप है, अकोटा डांडिया बाजार सोलर ब्रिज रूफटॉप है, हर एक के घरों के अंदर सोलर रूफटॉप लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी के बारे में अगर बात हो रही है तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। इसी वजह से आप लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत जरूरी है। हम लोग बात कर रहे थे, मुझे बता रहे थे वीसी साहब कि भाई कोई प्लास्टिक यहां पे यूज नहीं होगा, तो नो प्लास्टिक, सेव वाटर, सेव एनर्जी, इन सारे विषयों आपके बीच में रखे जाएंगे। लेकिन इसके जरूरियात है छोटे छोटे प्रयासों की। अपने घर के अंदर पानी बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो ये छोटे छोटे प्रयास कौन करेंगे? तो ये सभी हमें लोगों को करना है। एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली, इस विषय को लेके हमारा एक छोटा सा प्रयास बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर लाएगा। इस मान्यता के साथ हम सभी आगे बढ़े। यही Y20 का, मैडम ने बोला कि भारत देश को आजाद करवाने के अंदर था, या भारत देश को आज चलाने की बात हो, या भारत देश को आगे भी चलाने की बात हो, वो युद्ध कर सकता है। तो इन छोटे प्रयासों के माध्यम से हम लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, यही आशा अपेक्षा के साथ वंदे भारत मातरम। Thank you. Thank you, Shri K.U. Rokadia ji. May I now request Dr. K.M. Chudasama, the officiating registrar of Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, to kindly propose the vote of thanks. Once again, good morning all of you. I am Dr. K.M. Chudasama, registrar officiating of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. I take this opportunity to formally present the vote of thanks on behalf of the university. On behalf of Honourable Chancellor Madam, on behalf of Vice Chancellor Sir, on behalf of Senate members, syndicate members, staff and student, I take this opportunity to thank Honourable Chief Guest of today's function,
Shri Keyur Rokadia ji, Honorable Mayor of Vadodara City and MLA Sayajiganj, for sparing his time from the busy schedule and coming here to grace this occasion. At the same time, I take this opportunity to thank Honorable Chancellor Ma'am for providing her blessings and sparing time for this event today. Many thanks to Ministry of Youth Affairs, and we have Honorable Secretary Ma'am, Ms. Meeta Rajivlochan here. Thank you, ma'am, for being here with us in the inaugural session. We thank officially the Ministry of Youth Affairs for joining hands with Maharaja Sayaji Rao University of Baroda and giving us an opportunity to organize this event. I also thank Honorable Vice Chancellor Sir for motivating us and providing all the support to organize this event. I cannot forget the name of delegates amongst one who is with us, Honorable Archana ji, a UN representative and representing the youth and having a stake in climate change. She is here with us on the dais. Many thanks to you, ma'am, for sharing your views. But this is not something which is the only thing she is going to share. A lot of important things we are going to learn from her in the coming sessions. Thank you, ma'am, for being with us. Many thanks to the invited dignitaries here from around the globe as well as from India, the media representatives, the invited guests from various domains, from government and the officials from various agencies. I should officially thank the Standing Committee Chairman also and the former MP ma'am for joining us in these inaugural sessions. Media has been very important and playing a crucial role in dissemination of awareness, and they have joined hands with us for sharing thoughts on climate change and disaster risk management. Thanks to the media officials and those who are directly and indirectly involved here in today's event. I also place on record a thankful thought to Department of Education, Government of Gujarat, who have joined hands with us to organize this event. Many thanks to one and all, those who are directly and indirectly associated for this event. Thank you. Thank you, sir. May I now request one and all present here to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. And in conclusion, I, Dr. Anita Shukla, and my colleague, Dr. Sanskriti Majumdar, we would like to express our gratitude to all the dignitaries, delegates, and participants present here. We hope